News from Uttarakhand now, and Uttarakhand goes to poll for its 70 members assembly constituencies there, and Uttarakhand government has alternated between the BJP and Congress since the state's first assembly election in 2002. So the big question is, will it do the same after today? The BJP's task is it's quite challenging to beat the anti-incumbency and also the electoral trend of the incumbent government being voted out. Remember, the BJP in fact changed chief ministers in the last years of their government. There are 3 chief ministers, in fact, in the last 5 years, and especially at the end, it was to take on this anti-incumbency that the chief ministers were changed. It's seen 11 chief ministers in the last 2 decades. Let's go across to Akshay for more. And Akshay, so what are the reports coming in so far? What's the polling been like? Well, it's pretty active, Gargi. We are here in the Chief Minister Pushkar Singh Dhami's constituency, Khatima. You can see all the arrangements are in place by the local authorities here. Masks are being distributed for the people who are not wearing a mask. There is arrangement for sanitization. Thermal scanning is also being done. So the voting is happening inside, and these are all the arrangements that are here. You can see these are long queues at the polling booth, and to distribute the people, a lot of polling booths have been set up in this particular school. The Chief Minister of the state, Pushkar Singh Dhami, has already cast his vote, and now he's appealing to the people to come out and vote in record numbers. As you have rightly mentioned, there has been a trend in the state to vote a new government in every 5 years. So we'll try and speak to the people and try to understand the factor of anti-incumbency and whether it is prevailing and whether it is a threat for the Bharatiya Janata Party. आप लोगों से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता ने हर 5 साल में सरकार बदली है. इस बार क्या आपको लग रहा है ट्रेंड, क्या वो दोबारा होने जा रहा है या फिर इस बार कुछ बदलाव रहेगा? अब देखो, ये तो अब जनता के ऊपर है, जो भी बदलाव जनता कर सकती है. इसका तो हमें जनता ही, मैं इसलिए हाँ, हो सकता है, बदलाव हो भी सकता है और काफी विकास हुआ है. हो सकता है कि फिर से दोबारा आ जाए पुष्कर सिंह धामी जी, और काफी विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है. जो है काम वो बताया जाएगा. और यही है कि हम लोग यही चाहते हैं, जो युवक है बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए. बस जो हम पढ़ाई लिखाई करके जो हम घूमते फिर रहे हैं, ये इसका जरा विकास होना चाहिए. अच्छा, 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं पहाड़ों में. आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ. एक है बेरोजगारी, दूसरा है महंगाई और तीसरा है पलायन. जो पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन होता है, जैसे कि आप युवा है, वो क्या लगता है कि इस इलेक्शन में क्या वो मुद्दों को उठाया गया राजनेताओं द्वारा या फिर दूसरे मुद्दों पर बात की गई? मुझे लगता है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से पलायन पर सिर्फ बात हो रही है. और क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत कम समय मिला, और मुझे लगता है कि जिस चेतना से उन्होंने इन 2-3 महीनों में इतना कार्य किया है, और आगे यदि उनकी सरकार बनती तो दोबारा वो इसी चेतना से इन विषय मुद्दों पर भी कुछ न कुछ कार्य जरूर करेंगे. तो आपको होप है कि एक और बार मौका देना चाहिए? बिल्कुल, जो उन्होंने काम किया अभी तक, उससे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ होना चाहिए. आप लोग बताइएगा भैया, आप मतलब वोट यहाँ करते रहे, खटीमा से ही है आप लोग, क्या ट्रेंड है? मुख्यमंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? माहौल तो सर 10 मार्च को रिजल्ट आउट होने के बाद ही पता लगेगा सर. वेट इन वॉच. हालांकि कुछ मुद्दे, जैसे कि अगर आप रेट करें, टॉप 3 मुद्दे क्या है राज्य के इस वक्त? सबसे बड़े मुद्दे जो लोगों के हैं, ये बेरोजगारी सर, ठीक है, और जो पलायन की आपने बात की, हाँ, कि मतलब पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ लोग यहाँ से पलायन करते हैं, तो पलायन नहीं होना चाहिए. हाँ. लोगों को अपने घर में ही रोजगार मिलना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है जी. अच्छा, यूनिवर्सिटीज की एक बात की जाती है, विश्वविद्यालय उत्तराखंड में बहुत ज्यादा नहीं है. स्कूल अच्छे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ के बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि आप लोग भी है, देखा होगा आपने. क्या लगता है उस मुद्दे पर और काम करने की जरूरत थी? यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों की बात की जाए अगर अच्छे राज्य में, यहाँ पर जैसे मान लो कुछ पॉलिटेक्निक स्कूल भी नहीं है ज्यादा. हाँ. अब इधर हम लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है ज्यादातर. तो ये सब दिक्कतें तो हम लोगों को होती है ना जी. अब हम लोग देखेंगे क्या होता है आगे. So there are certain issues for the people of the hills, Gargi, as you must be aware that the migration, the formation of ghost villages is quite prevalent in the hilly areas. Where we are standing, Khatima is still in the plains, but if we go up, there are
lot of ghost villages where the election commission could not even find a single voter. As far as the basic infrastructure is concerned, even the election commission in its report said that there are 262 villages where the people will have to walk for over 5 kilometers to cast their vote. There are 33 such villages where people will have to walk for over 10 kilometers to just cast their vote because there is a motorable road. So these are certain issues. The BJP has been in power for the past 5 years. To beat the anti-incumbency, they have changed the chief ministers. They have a new face now, Mr. Pushkar Singh Dhami, and he has a big challenge to break this trend, to bring back his government in power, and the Congress would be certainly hoping for the anti-incumbency to play a bigger role in these elections. Right, Akshay, the Congress, if we talk about, one of the issues that they faced is infighting, and it's not been very easy. Initially, people were saying it's going to be an easy one for the Congress. However, infighting seems to have really harmed them. Well, exactly. And the biggest example is the constituency of the former Chief Minister Harish Rawat. Now, Harish Rawat was earlier, he wanted to contest from Ramnagar, but he was sent to Lal Kuwa. The candidate of the Congress party, Sandhya Dalakuti, who had to contest from Lal Kuwa, she is now contesting as an independent. And certainly she is going to dent the votes of Mr. Harish Rawat. So there has been certain groups in the Congress party as far as Uttarakhand is concerned, and this has been the talk of the town as well, because Congress party has been hit by infighting. There have been certain groups that have been trying to damage each other for better power in the party and to become chief minister as well. There has been infighting among the top leadership in the state.